Hi guys, you are welcome back to Dynamic Natural English. In the sequence to make you practice conversation, today it's turn to make you practice in past indefinite tense. It is very important tense because most of the time people are asked in interview to explain their activities that they did yesterday. अक्सर लोग फंस जाते हैं इस बात में कि कल की बातें कैसे बताएंगे, और इसको यूज़ करने में अगर प्रैक्टिस नहीं है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को या सिंपल पास्ट को, तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू टेल देयर एक्टिविटीज़ दे डिड यस्टरडे। इसी को लेकर के हम आज आपको कुछ प्रैक्टिस कराने के लिए आए हुए हैं। इस सीक्वेंस में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पास्ट एक्टिविटीज़ को हम पास्ट सिंपल पास्ट टेंस को ध्यान में रखते हुए बताते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को हमने बताया था कि एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब होता है उसका डिड, जो कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड टू मेक सेंटेंसेस। Now let's practice through the questions that I have today here, and you have to answer the questions I'll ask you and will help you to make answers of these questions. Let's start without any delay how to answer the questions in past indefinite tense. Question number 1, did you live in your native village in childhood? क्या बचपन में आप अपने नेटिव विलेज में रहते थे, यानी जिस गांव में पैदा हुए उसी में रहते थे बचपन में? तो व्हाट विल बी योर आंसर? यस, अगर रहते थे तो बोलेंगे हाँ, यस आई लिव्ड देयर, और आई लिव्ड इन माय नेटिव विलेज। यस आई लिव्ड इन माय नेटिव विलेज in childhood. I lived, here did is used and live is the verb. This is interrogative sentence जहाँ पे did और helping verb और main verb का first form use किया गया है. When you write the answer in positive sentence, you have to make it second form. live का second form हो जाएगा, did हट जाएगा. Yes, I lived in my native village in my childhood. Question number 2, did you take dinner last night? कल रात में आपने खाना खाया था? कल आपने रात में खाना खाया, यानी कि रात का खाना डिनर होता है. Did you take, क्या आपने लिया था या खाया था? डिनर लास्ट नाइट, पिछली रात को डिनर आपने खाया था, बोलेंगे yes I took, yes I took dinner last night. अगर नहीं खाया था बोलेंगे no I didn't take. नेगेटिव बनाएंगे तब भी did का यूज करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. This is positive sentence, that's why I have used the second form of main verb took, of take. Now third question, did you meet your friend yesterday? कल आप अपने दोस्त से मिले? नहीं मिले हैं तो बोलेंगे no I did not meet my friend yesterday. This is the answer. Now I did not meet my friend yesterday. मिले हैं तो बोलेंगे yes I did, or I met my friend yesterday. I did is the short answer. छोटे में आंसर देना है तो I did में काम चल जाएगा, but if you want to answer completely you will say yes I met. मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म meet का met हो जाएगा. I met my friend yesterday. Your friend will become my friend. Question number 4, did your brother go to Delhi? Did your brother go to Delhi? क्या तुम्हारा भाई दिल्ली गया? अगर गया है तो बोलेंगे yes he went. Yes
yes he went. हाँ वो गया, नहीं गया है तो बोलेंगे no he did not go to Delhi. He did not go to Delhi. दोनों तरह से आंसर है, yes में और no में भी, निगेटिव और पॉजिटिव. क्वेश्चन नंबर 5th, डिड यू लिव इन हॉस्टल वाइल परसुइंग B.Ed? B.Ed करते हुए क्या आप हॉस्टल में रहते थे? अगर रहते थे बोलेंगे yes, yes I, you will become I, you को I में बदल देंगे. did live हो जाएगा lived. yes I lived in hostel while pursuing B.Ed. नहीं रहते थे बोलेंगे no I did not live in hostel, I was a day scholar. Now next question, that is here with the helping verb. Did the English rule over India for 200 years? क्या अंग्रेज ने भारत पे 200 साल तक हुकूमत की? अगर किया है तो बोलेंगे yes, yes the English means अंग्रेज. yes the English. now did rule को हम बदल देंगे ruled में. yes the English ruled over India for 200 years. हाँ अंग्रेज ने भारत पे 200 साल तक हुकूमत की. These were the questions which were made with a helping verb as did. Now come to the questions using question words. First question, what did you do in the morning yesterday? कल सुबह आपने क्या किया? What, in the answer of what you will have to tell the name of something. कुछ चीज़ का नाम बताएंगे, तो जो काम किया है उस काम का नाम बताएंगे. I went to school, I went to play cricket, I went to market. So anything you did, आपने जो किया उसको बताएंगे. You can say what did you do? You will be changed into I में बदल देंगे. did do हो जाएगा did. I did my homework. मैंने अपना गृह कार्य किया. My homework yesterday. You can add in the morning yesterday, but I have told you in short. I did my homework yesterday. आप बाजार गए थे तो I went to market yesterday. Where did you go in the evening? शाम में कहाँ गए? You have to answer this question word where. In response to where you have to tell a place. जहाँ गए थे बताएंगे. I went to cricket ground. I went to cricket ground in the evening. मैं शाम को क्रिकेट ग्राउंड गया. When did you get up today? आज कब उठे? उठना सुबह में उठने के लिए बात होती है. When did you get up today? So you will say did get up will become got up. Did get up will be changed into got up. You will be changed into I में बदल देंगे. जब आप आंसर देंगे तो अपने को you नहीं I बोलेंगे. I got up at 7 o'clock today. जब उठे उसका टाइम बताएंगे. I got up at 6 o'clock, I got up at 4 o'clock, I got up at 6, 5. Any time you got up have to be mentioned here. यहाँ बताना है उसको. Now next question, how did you lose your bag? आपका बैग कैसे खो गया? तो कैसे खोया है वो प्रोसेस बताना है, जिस तरह खोया है. तो did lose will be changed into lost. Lose, lost.
I lost my bag while going to school. स्कूल जाते हुए मेरा बैग खो गया. May be possible that he was hanging the bag somewhere in the carrier of the bicycle. It was loose and fell down. Loose था और गिर गया. So I lost my bag while going to school. स्कूल जाते हुए मेरा बैग खो गया. Now next question, why did you not go to school? आप स्कूल क्यों नहीं गए? You have to tell the reason. Why के आंसर में reason बताना होता है. What was the reason that you did not go to school? You will have to answer this question. I did not go to school because the reason क्या है reason? Because I was ill. मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया. This was the reason. Illness was the reason. तो ये रीज़न हुआ. इसी का आंसर ये बनता है क्वेश्चन वाई जो पूछा गया है. Who defeated Napoleon in war? युद्ध में नेपोलियन को किसने हराया? So who defeated? In the answer of this question, who, you have to answer the person who defeated or the party who defeated. His rivals defeated. उसके विरोधी ने हराया. Defeated Napoleon in war. His rivals defeated. So who defeated? His rivals defeated. Who के आंसर में किसी का नाम आता है, वो पर्सन हो सकता है. Now this question answer session is over. You can make your own question with the help of did and the question word with did to tell something, to ask something in past or simple past. पास्ट की बात को करने के लिए डिड से सवाल किए जाते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड के साथ में डिड को यूज़ किया जाता है, तब फिर आंसर बताते हैं. और जब डिड को यूज़ किया जाएगा यू हैव टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज़ किया जाता है, सेकेंड फॉर्म को नहीं यूज़ करेंगे, अदरवाइज इट विल मेक अ रॉन्ग क्वेश्चन. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू स्टोरी. लिसन द स्टोरी केयरफुली and you have to answer some questions that will be asked by me. Listen the story. Once there lived a widow in a certain village. She had two daughters, Vimla and Kamla. Vimla was her real daughter and Kamla was her stepdaughter. Vimla was lazy and fool, but Kamla was intelligent and hard-working girl. She was always busy in doing her works. Even she was so God-fearing and hard-working girl that she helped people with her own hands by doing their works. Hence, she became very popular in her village. अब इस कहानी का मतलब समझा देते हैं. ये पूरी कहानी पास्ट इंडेफिनिट में है. किसी गांव में एक विधवा रहती थी. विडो, WIDOW, विडो मतलब विधवा. किसी गांव में एक विधवा रहती थी. उसकी दो लड़कियां थीं, विमला और कमला. विमला उसकी सगी लड़की थी जो कि बेवकूफ़ थी, बुद्धू थी और सुस्त थी, जबकि कमला उसकी सौतेली यानी स्टेप डॉटर थी जो कि बहुत बुद्धिमान, अक्लमंद और परिश्रमी लड़की थी. वो हमेशा अपने काम में लगी रहती थी, कठिन परिश्रम करती थी और यहाँ तक कि वो अपने पड़ोसियों की भी मदद करती थी, बहुत सारे लोगों के काम कर देती थी. इसकी वजह से लोग उसको बहुत पसंद करते थे और वो बहुत गांव में मशहूर हो गई. Now this is the time to ask questions. Question number 1. Listen it carefully after understanding this story.
Who live in a certain village? किसी गांव में कौन रहता था? How many daughters did she have? Question number 3. Who was her real daughter? Question number 4. How was her stepdaughter? उसकी सौतेली लड़की कैसी थी? Last question. How did she become very popular? कैसे वो बहुत मशहूर हो गई? I'll give you the answers of all these questions in the description box. First, you have to answer all the questions yourselves, then check if you have written them correct. Thank you for watching. Don't forget to share and subscribe this channel.